हंस के सब हाँ बोल रहे हो. आ जाओ. Come sit. अरे come, what do you all got up halfway? आ जाओ, आगे. It's just us. Let's get comfortable. For the next couple of hours, it's just going to be us. No one else in this room. आ जाओ. I have showered, I swear. So y'all are not going to get any smell. मैं काटता भी नहीं हूँ. आ जाओ, get comfortable. So good to see everyone on a Monday evening यार. वो भी पोएट्री के लिए. कोई काम नहीं है तुम लोग को. अच्छा जरूरत है. I'll come to you. I want to know why you need poetry on a Monday evening. आपका ना, I'll come to you right now only. Hi. Oh wait, sorry. My name is Arsh Malhotra. I will be your host for today. Welcome to Habitat Studios Monday Open Mic. Now I just need to talk to him because he said that he needed to come to poetry on a Monday evening, and I need to know why now. बताइए. Don't want to miss this opportunity. Fair enough. मुझे लगा दुख दर्द की कहानी बताओगे यार आप. तो पता चलेगा. अच्छा पता चलेगा. कौन दिल टूटे आशिक आशिकी है? हाथ ऊपर करो. तो सब लग रहा है. सब है. नहीं तो आप तो लोग आते नहीं ना मंडे ओपन माइक पे. You guys wouldn't be here otherwise. What's your name, sir? विनय सवाल. विनय जी, आप क्या करते हैं? मैं आईसीआईसीआई बैंक में हूँ. आईसीआईसीआई बैंक में क्या करते हैं? आईसीआईसीआई बैंक में डीएसएनजी में हूँ. अच्छा, लंच टाइम नहीं चल रहा आपका? नहीं चाहिए. वो अच्छा है. वो क्या, व्हाट डज योर जॉब एंटेल? सॉरी. डेट सर्विस मैनेजमेंट ग्रुप. डेट सर्विस मैनेजमेंट ग्रुप. तो आप कॉल करते हो कि वसूली करना है? हाँ बस वही समझ लो. तो वसूली भाई. करना पड़ता है. वसूली भाई basically like sophisticated वसूली भाई. debt service management, sophisticated वसूली भाई, या मुन्ना भाई, जो भी बुलाना है. मुन्ना भाई से अच्छा सोफिस्टिकेटेड है. Sophisticated, सही है. सही है. And how long have you been in ICICI Bank, so? Since 2022. तो एक साल ही हुआ है. नहीं 3 साल हुए. 2020. अच्छा 2020, सॉरी आई हर्ड 2022. ठीक है. और उसके पहले आप कहाँ थे? उसके पहले घर पे ही था. लॉकडाउन चल रहा था. Fair enough. I feel like I'm interviewing him. मुझे भी लग रहा है जॉब. What are your 5 strengths and 5 weaknesses? Please let me know. No, it's fine. How many of you guys are coming to a poetry open mic for the first time? Raise your hand. Raise your hand. Come on. And how many of you guys are coming to Habitat for the first time? काफ़ी लोग. So before we get started, I'm just going to go over some quick rules. We have quite a few performers and we have a show after this, so we're going to be wrapping up really quickly. Each performer gets 4 minutes. 4 minutes is ज़्यादा मत लेना. Please, there's a timer at the back. Turn around. See that timer? You can see that timer? Yeah. There are going to be 2 lights. One light you'll get at 3 minutes, 30 seconds. Turn around again and see that light once. Turn. Can you see that light? 3 minutes, 30 seconds पे आपको light दिखाई जाएगी. That means 30 seconds you have to get off stage. And at 4 minutes, that same light will come on. And it'll stay on. Look. I know I'm beautiful, but look at the back, guys. That's it. The light will stay on. So please respect the time because we've got about 13 performers to perform today, and that's a lot. And we have to wrap up the show within like an hour 40 minutes. So मुझे भी थोड़ा material करने को time दे दो ना, please. नहीं तो देखो भाई, मैं host हूँ. I am like जो समोसा है ना, जो crust है समोसा का, वो audience members है. जो आलू है वो performers, और मैं हूँ मटर. किसी को नहीं चाहिए, फेंक लेंगे. So, it's fine if you guys don't give me as much respect, but respect the other performers. They've written a lot of their pieces. Now in those 4 minutes, you want to do 40 pieces, you want to do 10 pieces, you want to do 4 pieces, you want to do 1 piece. That's up to you, but in 4 minutes. Can you see the camera? Yeah? People are watching. Now which people, I don't know. We're just going to call them the Illuminati. Cool? And if they see that you've taken more time, the chances of you coming back here diminish by the second extra you take. I know it's a bit harsh, है ना? Stick with it. If you guys want to keep coming back, here, I'll give you a small story of how important it is to stick to the time. 3rd April 2022. I did my first ever. 3rd April is today. 3rd April 2022, after countless yeses and typing on that post, I got to do my first ever poetry open mic at Habitat Studios. 3rd April 2023, which is today. I am your host. 1 year later, on the same open mic. So stick to the time, yeah? It's beneficial for everyone. Cool? Now, if you have a trigger warning in your piece, if you are speaking about something sensitive, please give a trigger warning. It's very, very important to give a trigger warning. Because sometimes I understand that people might not want to listen to a certain subject that you're talking on.
So give that trigger warning, and if someone's uncomfortable, they will step out for 4 minutes. It's nothing personal. So if someone does step out between your piece, don't take it to the heart. It's fine. They'll come back as soon as your piece is over. So it's important to give a trigger warning. Anything else? I think we're good. Before I call on the first act, I want to test your level of enthusiasm on a Monday evening. So I'm going to count to 3. And you're going to give me the loudest round of applause you'll have. Okay? Monday, yaar, abhi hafta shuru hua hai. Come on. Okay? 3, 2, 1. Keep the applause going for our first act of the evening, Hemangini. Thank you, and happy anniversary. Yes. Hi, guys. I'm Hemangini, and I go by the name Hemi. I'm a writer and a choreographer. I write about the things that I can't dance, and I dance about the things that I can't write. I have a few pieces today, a couple of pieces. One is an old piece that sort of brings you closer to an understanding of who I am and the way I write and the way I think. Here goes. It's called Rainbows. If you could just for once step into my mind, read my thoughts that run as fast as light. Know that confusion between how I feel and how I behave. It'll all make sense to you and you'll see the bursting wave. There's a spark somewhere in me that tells me to disobey, to break the rules and to create my own way. To walk in silence when I need to respond and to cry along when I need to hold on. To wake with a smile and sleep with a frown only tells you how this world is to me. It's not gentle, it's not swell, but all I need is a bed to rest. If only you could see the thoughts I project, my mind running free, you'd see how wonderful this world before us could be. There's somewhere in this world where our thoughts collide, where I see yours and you see mine, where blue turns yellow and harsh words turn mellow. Where I see you and you see me. There's this world I believe in that exists in my mind, where you and I reunite. Thank you. Thank you. And the other one is a bit dark. It's like sort of about love, but it's the kind of love that you're not sure why you're together. If anyone's ever experienced that. Every day. Your lonely lover. I'll be your lonely lover, let the gates close and remind you of thunder. I have nobody but your breath to guide me, and you nobody but me to fan your flames. My brash condolences for your grieving heart linger like fingers strumming a harp. It's a tune I'm well versed with playing, and the dreams you seek, they keep on delaying. I'll be your lonely lover when the rain soaks you dry and you feel like no one understands your fragmented mind. I'll light a fire for you and keep you warm. Till the snow fades away, we'll weather the storm. You'll find my neck wrapped around yours like a python. We weft and warp. Not continuously, more like patchwork. You spit on me and call me pathetic when in reality you're morphed into me and you try to act heroic. Swallow that pride, exhale the ego. Your best bet is me. Ergo, I'll be your lonely lover, so you can finally stop trying to be a hero. Thank you. And a small one to leave you guys with. This is called Sun Prayer. It's a bit of a prayer for myself. Color me green, the sun has arrived. I haven't been the leaf thus far. Then again, I've also not ever been fed the sun. Bring me the charcoal and highlight my shadow. Let the sun gleam over me and fall far into my hollows. Allow the wilted to perish, the buds to emerge, the sunken to rise, and the bewildered to return. Thank you, guys. That was my time. And I just want to tell you a little bit of a secret before I go. I have my first book coming out. And that was really nice, guys. Thank you. So if you want to follow my work, it's Imagine with Hemi. And yeah, I hope to see some of you on my page and to see if you like the book. Thank you. Bye. Keep it going, keep it going, keep it going, man. That was beautiful, yet painful.
Yeah. Who all remembered their exes? Raise your hand. Yeah. Quite a few people. I love the crowd today, dude. Monday, कितने लोग मिल रहे हैं? Lovely. We'll talk to all the Vellas. Come. So we're gonna have some fun. Okay. Even though we've got like quite a few performances, I'm hopefully that all of us are here. I'm gonna try to get to know everyone. If not everyone, I apologize. We can talk after the show. But I'm just gonna try to get to know all of y'all. Hi, you look very interested. Hi, sir. What's your name? Manoj Kumar. ये वाला, right? ये वाला ना? Dude, I'm 25. I'm not that old, yeah. But I get references. क्या करते हो आप, sir? Animator. Wow. And कौन से टाइप पे प्रोजेक्ट्स के आप काम करते हो? 3D एनिमेशन. वो जो बाहर निकलता है स्क्रीन से. क्या बात है. तो आप ग्लासेस पहन के 3D एनिमेशन करते हो? नहीं, 3D ग्लासेस पहन के 3D एनिमेशन करते हो? नहीं. तो फिर हमें क्यों पहनना पड़ता है? कुछ करो ना नया टेक्नोलॉजी दैट आई हैव स्पेक्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वेयर 2 glasses at once. I'm blind with it, I'm blind without it. Like if I wear the 3D glasses, I'm blind because I'm not wearing my specs. I don't wear the 3D glasses, everything's blur anyway. Kuch karo na. Any projects, any interesting projects that we might have seen you on? Bad Guys. किस-किसने सुना है Bad Guys के बारे में? Bad Guys. मैं जोक मारने वाला था वो देना रियलाइज रिकॉर्ड हो रहा है. तो समझ जाओ. हाँ. What is Bad Guys, sir? It's a series. OTT? कौन से? Can you reveal the OTT? Prime. क्या बात? अभी आ रहा है. It's not out yet. तो like, what is the series about? It's a movie. On? अच्छा, you don't know. You don't know. You don't want to tell us. वही है कुछ. हाँ. वही रहेगा कुछ. वही रहेगा कुछ. सही है. And आप लिखते हो? आप आज परफॉर्म कर रहे हो? कौन से दोस्त को? हितेश. आप सिर्फ आप आए हो हितेश को सपोर्ट करने? और एक फ्रेंड है. अच्छा. जो कहाँ पे? ये पीछे. तो तुम लोग ऐसे ट्रायंगल में क्यों बैठे हो? अच्छा, वीडियो. ये खुद अपनी वीडियो लेके आया है कि एक एंगल से ये बनाएगा, एक एंगल से ये बनाएगा. जो हमारा 3 cam सेटअप जो है पीछे, उसका क्या करें हम? विवियन, कैमरा बंद कर दे ब्रो. छोड़. खत्म. नहीं, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए. नहीं, तेरे परफॉर्मेंस में हम बंद ही करेंगे. 3 एंगल है. I'm kidding. What do you do, sir? I'm a student, LLB student. LLB student, law. कहाँ? हैदराबाद में. हैदराबाद से आया परफॉर्म करने के लिए. Round of applause, guys. Brilliant यार, हैदराबाद से. अच्छा, तीनों ये लोग सपोर्ट करने आए हैं हैदराबाद से. साकिब भाई कहते हैं दोस्ती. भाई मेरे दोस्त 20 मिनट दूर रहते हैं. अपन दोस्तों को बहुत मानते हैं, वो भी अपने को बहुत मानते हैं. तो तू क्या कहना चाहता है ब्रो? वो सपोर्ट करते हैं, जिंदगी में सपोर्ट देते हैं. दोस्त अपने को दिया है सब लोग. नहीं, उसने तो क्या दिया? ये भी लोग हैं हमारे दोस्त. मेरे दोस्त जो सुन रहे हैं अभी, सुन बे. तेरा यार हूँ मैं. यही है सोनू की टीटी. क्या था यार जो ये. हाँ, समझ. भावनाओं को समझो. पोइट्री इज ऑल अबाउट इमोशन गाइस. इमोशन. हाँ. हैदराबाद में कौन से कॉलेज में? पढ़ाला रामारेड्डी लॉ कॉलेज. सॉरी एक और बार. पढ़ाला रामारेड्डी लॉ कॉलेज. लॉ कॉलेज गाइस. लॉ कॉलेज. सॉरी भाई. एंड कौन से साल में हो आप सर? फर्स्ट ईयर. कितने साल के हो आप? 21. लेकिन ग्रेजुएशन के बाद LLB किया 3 साल. अच्छा, हाँ, वो तो आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर एबिलिटी यार. डबल डिग्री. और वो से सेकंड डिग्री? This one was the second degree. First degree was BFA, Bachelor of हाउ इज ही डूइंग डबल डिग्री ब्रो? उसने कर लिया है 1 डिग्री और वो दूसरी डिग्री कर रहा है. मुझे लगा तो 2 डिग्री साथ में कर रहा है. एक किया, अभी एक कर रहा हूँ. नहीं, सही है यार. सही है. मेरे से 1 डिग्री नहीं हो पाई. डबल डिग्री. How many of you guys are audience members? Just audience members, not here to perform. Whoa! Round of applause for the audience members. It's important for you guys to come, dude. मैं तो बकचोदी करता रहूँगा 12 घंटे. मुझे कोई टेंशन नहीं. और ये लोग भी. इन लोग को माइक दो बस. Without an audience, we're nothing. And without validation also, we're nothing. यार हमें पैसे तो मिलते नहीं. क्या करूँ? I honestly wish, dude, honestly,
अगर मैं रेस्टोरेंट में होगा और वेटर बिल लाएगा ना, उसको बोलूँगा भाई कॉम्प्लीमेंट ले लेना, पैसे नहीं है मेरे पास, तू अच्छा दिख रहा है ब्रो आज। क्या मस्त सर्विस किया, 5 स्टार। पोएम सुनोगे? नहीं सुनोगे तो मना कर दो यार, बुला लूंगा मैं अगले बंदे को। हाँ तो बोल दो यार एक। नाइस। सो हिमांगनी, यू डिड अ पोएम ऑन इफ शी इज स्टिल अराउंड। ओह शी इज, आई कांट सी यू, सॉरी। हाँ, you did a poem on one-sided love, right? And I have one of my favorite pieces. 3 people or 4 people in the audience have heard it like at least 1,000,000 times, if not more. It's one of the first ever pieces I wrote, and it's about love. बचपन में किस किस को प्यार हुआ है? Raise your hands. Make some noise actually. And बचपन में क्या सिखाया था हमें? करण जौहर ने क्या सिखाया था? कि प्यार सबका काटा है उसने, सबका काटा है। सब दोस्ती को प्यार समझ बैठे थे ना? हाँ, फ्रेंडशिप बैंड ने, if a girl or a guy came up to you who you were crushing on and gave a friendship band, you went from your person to Ali from Dhoom like this. Like पूरा इमेजिन कर दिया था लाइफ की, मेरी लाइफ इसके साथ ऐसे होगी, बच्चे ऐसे होंगे, पोते। बच्चों के नाम ना, आई विल गेट टू अ स्टोरी सर जिसमें मैंने बच्चों के नाम सोचे हैं, डोंट वरी। बाद में शो बहुत लंबी है, मेरे पास बहुत हार्ट ब्रेक्स है। ऐसे नहीं शायर बनते हम, दिल बहुत टूटना पड़ता है। जब एक्स ने बोला कैन आई गेट बैक विथ यू, मैंने बोला हाँ लेकिन ब्रेकअप कर दे 2 महीने में, कंटेंट निकालना है। बट दिस पोएम इज टाइटल्ड द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स। हिंदी में कहे तो सपनों की रानी, परी, जो भी कहना है कहो। So the girl of my dreams, it's one of my favorite poems, and I'd written this when I had an encounter with one of my ex crushes from childhood. It goes like, I closed my eyes but I saw her there, standing in front of me, radiating with elegance. She looked like a queen. It had been 15 years and she was the first girl to ever steal my heart. Who knew life would be so kind to give me another chance to restart? Praying to God she remembered me, I approached her with nervous hands. Hoping she could spare a few moments, I asked her for a dance. She held my hand as I led her to the floor. I asked her if she remembered who I was. Trying to place me in her head, she took a long pause, waiting until she realized it was the same person who fell for her as a kid. Then she nodded in agreement, and I understood that she did. As the song began, we reminisced on our childhood. Reliving those memories, we felt something we never knew we could. She held my hand as I took her to look up at the sky. It was in that moment I knew I had to tell her that I felt the same as the years went by. I tried to pull her close to me to feel her heart against mine as we held each other. It felt like 2 souls were lost in time. Butterflies in our stomach, giggling with laughter, we forgot our despair as our eyes locked with sparkle. We knew it was love that was in the air. I held her waist and I bent down to give her a kiss. But my alarm went off as my eyes opened and I was robbed of that moment of bliss, which is why the girl of my dreams will unfortunately always remain the girl of my dreams. Thank you very much. Please welcome our next act, and he's the first time performer at Habitat. So huge round of applause for Hitesh. हेलो, नमस्कार आप सब लोगों को। हेलो, मैं हैदराबाद से आया हूँ यहाँ परफॉर्म करने के लिए। पहले आप सब लोगों को चेहरे पे मुस्कान लाएंगे। जब बादल बरसती है तो मिट्टी का खुशबू बाहर आती है, जब बादल बरसती है तो मिट्टी का खुशबू बाहर आती है, जैसे हम आपके साथ रहे तो हमारे मुस्कान की चमकान भी बाहर आती है। अगली कविता है, टाइटल उसका नाम है कोई बता दो हमें। मोहब्बत करने का मन करता है हमें, अपनी जिम्मेदारियाँ रोक लिया हमें। बहुत घूमने का भी मन करता है हमें, अपनी माँ का दवाइयाँ रोक लिया हमें। कपड़े खरीदने का भी मन है हमें, पापा का काली पर्स रोक लिया हमें। बड़े बड़े सपने देखते थे हम, इस दुनिया के लोग ने रोक लिया हमें। क्या है हम ये सोचने का वक्त भी नहीं है हमें। काम 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 करते रहे जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए, अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई हमारी, कोई बता दो हमें। अगली है लड़की के लिए। लड़की के लिए? हाँ, नहीं मैं कंफर्म कर रहा था। कत्ल करने की आदत नहीं थी वो कमाल भी ज़्यादा नहीं थी, कत्ल करने की आदत नहीं थी वो कमाल भी ज़्यादा नहीं थी। बोली थी मुझसे कि मिलने आऊँगी, जब आई लाल गाल का चमकान दिखा दी। कुछ इस तरह मेरी दिल की धड़कन बढ़ा दी, जब वो हल्के से बालों को हटाकर झुमका दिखा दी।
अगली कविता है गांव से जो लोग आए उनके लिए लिखा था। शहर ने आवाज़ दी पैसा कमाना है, शहर ने आवाज़ दी पैसा कमाना है, गांव से निकल पड़े। मौसम निकल जा रही, त्योहारें निकल जा रही, उम्र भी निकल जा रही, पैसा भी कमा रहा हूँ, पर शहर से घर तक पाँव नहीं निकल पा रही। अगली कविता है मोटिवेशन के लिए, बड़ा वाला है, थोड़ा 1 मिनट का है। क्या मैं रुक गया, क्या मैं रुक गया, पिछले साल इस साल वही लग रही है, पिछले साल इस साल वही लग रही है। बाप का सर झुकता हुआ देखा, माँ का हंसना छूटता हुआ देखा, दोस्तों का साथ छोड़ना देखा, प्यार का धोखा देखा, रिश्तेदारों का नीचे दिखाना देखा, ख्वाबों का लुफ्त होना देखा, पैसों का खेल देखा, लोगों के बीच में तन्हाई देखा, काम का तनाव देखा, बंद आंखों में आंसुओं को देखा। क्या खोया क्या पाया समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे तन सूरज के रोशनी, चांद का दीपक, सितारों का चमकना, पहाड़, मिट्टी, समुंदर, प्रकृति और वक्त, ये सब मेरे साथ है और अब सबका आशीर्वाद। बस थोड़ा इंतज़ार कर लेना, जीवन की हर एक संकट की दरवाज़ों को तोड़ के अपनी दिलचस्पी पे खड़ा रहूँगा, लोगों के तालियां महसूस करूँगा, सबको खुशियाँ बांटूंगा और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगा। और एक भी छोटा सा है, जन्नत को फिर से देखने का मन कर रहा है, जन्नत को फिर से देखने का मन कर रहा है, घर के पास जाने का मन कर रहा है, इस दुनिया को बोलने का मन कर रहा है, मुझे मेरी माँ के गोद में सोने का मन कर रहा है। ये मेरा लास्ट वाला, उसके बाद छोड़ दूंगा। गांव में सब लोग पहचानते थे हमें, इस शहर ने तो अनजान बना दिया। गांव में सब लोग पहचानते थे हमें, इस शहर ने तो अनजान बना दिया। अभी शहर को छोड़ो, पूरी दुनिया जान जाएगी हमें। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैबिटेट के लिए पहला थैंक यू बोलूँगा। मैं 3 मीम पे यस बोला था, लेकिन मेरे को आ गया। 1 महीना हुआ यूट्यूब स्टार्ट करके, मेरा हितेश राइट से यूट्यूब चैनल नेम, इंस्टाग्राम भी हितेश राइट से। 1 साल यूट्यूब पे काम किया हूँ, 0 से 80,000 सब्सक्राइबर्स दोस्त का ला लिया हूँ। अब अपना लिए बढ़ना है, अपना लिए काम करना है। सो एनीबडी वांट टू कोलैबोरेट, फील फ्री। हैदराबाद में हूँ, लेकिन मेरा खुद का सेटअप स्टूडियो रूम में ही है। कोई भी मैसेज कर सकता है, कोई भी देख सकता है, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। हैदराबाद से आई है भाई। मैं कोलैब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर, बिरयानी ला। पैराडाइज का होना, महफिल का होना, किस्सा होना बोलो। मुझे रेस्टोरेंट्स के नाम नहीं पता है ब्रो। हैदराबाद बिरयानी, हैदराबादी पीरियड। मुझे कोई रेस्टोरेंट्स का नाम नहीं। तू ऐसे बोल रहा है कि मैं कल हैदराबाद से वापस आया हूँ, मुझे क्या पता ब्रो। तू जाने। यू गाइस हैविंग अ गुड टाइम? गेम खेलोगे? तो पहला गेम है, वील प्ले विद द फर्स्ट 2 रोल्स एंड देन इफ टाइम परमिट्स आई विल आल्सो कम टू यू गाइस। ठीक है, सॉरी आज थोड़ा टाइट शो है। संडे को आते मैं सबको खिलाता, संडे को थोड़ा लीवे है हमारे पास, आज थोड़ा टाइट शो है। ठीक है, दिस गेम इज़ अ वेरी सिंपल गेम। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स दैट आई प्ले विद द इंटायर ऑडियंस। इट्स कॉल्ड ABC। ABC जानते हो सब लोग? कम ऑन, ABC। आई एम किडिंग, relax, but it's good to know that everybody knows the ABCs. It's an improv game. How many of you guys have seen improv before? हम कॉमेडी बुलाते हैं उसको, लेकिन है नहीं उस, बस बोलते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल गेम। पीछे वाले जो है ना हमारे लास्ट रो, यू गाइज विल बी इन्वॉल्व इन गिविंग सजेशंस। ठीक है, द पॉइंट ऑफ द गेम इज, सॉरी सर आपका नाम? विनय। एंड आपका नाम सर? संतोष। संतोष राइट? हाँ, तो हम ऐसे जाएंगे एक लाइन में। आपका नाम सर? राज। आप भी खेलोगे? हाँ, तो ऐसे जाएंगे, क्यों आप बीच में बैठे हो ना। We'll go like this and we'll end at Santosh sir. Cool? We'll all go one by one. I'll explain the rules of the game. It'll be very simple. The rules of the game are that all of you all have to collectively come up with a story, one line after the other, based off a suggestion given by the people at the back. Simple? Wait for it. Wait for it. It's not that simple. The catch is though, the letter that sir starts with, you have to start. Supposing sir gets, say, M. Supposing sir gets M for mother. So sir will say, and give me a random location. Come on, you guys. Kolkata. ठीक है, Kolkata. My mother is from Kolkata. Now Hitesh sir has to come up with the next line of the story starting with N. LMNO. Yeah. So
No kidding. Even my mother is from Kolkata. Then, ma'am, what's your name? Neetu. Neetu, ma'am will say, "Oh my God, what are you saying? Even my mother is from Kolkata." So M N O, and then we start. You have to start your next line with P, then with Q, R S T U V, so and so and so and so until we end at Santosh sir. Easy, clear. Any questions? I don't care. Let's get started. People at the back, give me a random letter. L. Start हो गया, लग गए. Chalo, done. Start with L. Now give me an activity you'd like to do on a first date. Drinking. How bad are your first dates? To make them interesting. Exactly. How bad are your first dates? Anything else? Or we'll go with drinking? Bowling. बुमराह के साथ. अच्छा, bowling. Sorry, IPL चालू है. तो मैं स्कोर दे दूंगा सबको यार. रिलैक्स करो. ड्रिंकिंग से जाता है, मज़ा आएगा. तो आपका सजेशन है ड्रिंकिंग. सर, आपको पहला लाइन बोलना है एल से. ऑन एनी स्टार्ट द स्टोरी बेस्ड अराउंड ड्रिंकिंग. तो कुछ भी एल से. और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे. हाँ, सो थिंक ऑफ डू द मैथ इन योर हेड फर्स्ट ओनली एंड कीप एंड सी द लाइन दैट्स कमिंग टू यू. लग जाते थे ड्रिंक करते करते. लग जाते हैं ड्रिंक करते करते. हितेश. एम. चलो चलो जल्दी जल्दी. मेरे भी लग जाते हैं ड्रिंक करते करते. सही है गाइस, सबके लग जाते हैं. नीतू जी. आपका नाम एन से शुरू होता है, कुछ भी बोल दो. अरे चलेगा, कुछ भी बोल दो. एनीथिंग. नॉट टुडे. कुछ भी. ना बाबा ना नो ड्रिंकिंग. ओके कूल. मैम. पापा से डर लगता है. पापा से डर लगता है. LMNO. हाँ ओ. ओ पापा से डर लगता है. हो गया ब्राइस, डोंट वरी, वी गॉट दिस, वी गॉट दिस, वी गॉट दिस. हाँ. P. प्यार ने ड्रिंक करना सिखा दिया. Oh. Guys, should we just stop the open mic and just hug everyone? I think everyone needs a hug right now. Bro, let's stop rolling the cameras. Pillows पीछे हैं, मंगा देते आगे. आ जाओ यार. हग करते अगले 1 घंटे. छोड़ो ओपन माइक. ठीक है. प्यार ने पीना सिखा दिया. हाँ. मुझे डर लग रहा है यार. क्यों मेरे साथ ही ये नहीं हुआ? क्यों मेरे साथ ही ये नहीं हुआ? ठीक है. रोज पीने लगे हैं. रोज पीने लग गए हैं. ओके. बाद में मिलते हैं. हाँ आएंगे आप पे, आप डोंट वरी. आप बहुत एक्साइटेड हो. हाँ. S. सो गए ड्रिंक करते करते. सर. तेरा भाई चलाएगा गाड़ी. नहीं भाई. ओके, एक क्विक रिकैप. लग गए ड्रिंक करते करते. मेरे भी लग गए ड्रिंक करते करते. ना बाबा ना आज नहीं. ओ पापा से डर लगता है. प्यार ने मुझे पीना सिखा दिया. क्यों मेरे साथ ऐसे नहीं होता है. सो गई मैं ड्रिंक नहीं. आर. रोज पीना शुरू कर दिया है. आपकी एज क्या है? 21. हाँ दिखते ही हो 12 साल के आप. रोज पीना शुरू कर दिया. क्यों मेरे साथ नहीं. RS. सो गई मैं पीते पीते. तेरा भाई गाड़ी चलाएगा. यूनिफॉर्म पहन के पिएंगे. ये स्कूल के बच्चे आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं छूट गए हैं. यूनिफॉर्म पहन के पिएंगे आप. हाँ जी. वक्त लगता है. अरे बट उसने W का V कर दिया ना, चलेगा. वी डोंट जज. वक्त लगता है इस दारू को भी इससे भुलाने में. मैम. Valentine's and you and that drink. UVWX. ज़ेरॉक्स शॉप पे मिलती है क्या? ठीक है. दारू XY. हाँ, ये दारू बहुत बुरी चीज़ है. सही है. नहीं सही है. लास्ट 3 lines of the story. Let's see how we end it quickly.
भाई सब देवदास बन के रखे हैं यार यहाँ पे. जिंदगी है तब तक पियेंगे. हाँ ए. तो दारू भी हार मान चुकी है. संतोष बी. बी बी कुछ भी. अरे इंग्लिश में बोल दे. Say it in English, it's fine, no issue. No? Okay. You translate and give me. कुछ इसको बोल दो, you translate and give me. बल्क में पीऊंगा. Okay, just quick recap before we move on. लग गए पीते पीते, मेरे भी लग गए पीते पीते. ना बाबा ना, आज नहीं. ओ पापा से डर लगता है. प्यार ने मुझे पीना सिखा दिया. सो गई मैं नहीं. पी आर रोज पीते अच्छा क्यों मेरे साथ ये हुआ. रोज पीती हूँ मैं. सो गई मैं पीते पीते. तेरा भाई गाड़ी चलाएगा. टी यू यूनिफॉर्म में पिएंगे. वक्त लगता है दारू को भी इसको बुलाने में. क्या बोला आपने. नहीं वैलेंटाइंस पे यू मी एंड ड्रिंक. जेरोक्स पे मिलती है क्या. ये दारू बहुत बुरी चीज़ है. जिंदगी निकल गई दारू पीते पीते. अब बस नहीं होगा. Guys, round of applause. Collectively, you all have come up with a story, yaar. Round of applause. Keep the applause going for our next performer of the evening. Guys, come on. From Mehak. Oh, hi. हाँ please. इसको भी बैठ के लेट के जैसे भी perform. Hi everyone, my name is Mehak and I'm a chef by profession in the morning, but a writer and a dancer by evening. So here's a little piece of mine to fade away your Monday blues. It's called लहरों से कुछ सीख के आई. अगर मगर काश मैं हूँ, मैं खुद की तलाश में हूँ. खो गई हूँ ना जाने कहाँ, खुद को पाने की आस में हूँ. गई थी गोवा सोच के कि अगर पूरी नहीं तो शायद आधी महक वापस ले आऊं. वो जो महक है ना बड़ी मस्त है. वो गीत की तरह सच में अपनी फेवरेट है. Her hair is even brighter than this one. Her cheeks don't hurt as she smiles all along. She has the courage to fight all along, and she's the one who has her self-respect. We underestimate the power of nature. क्या खूबसूरती से भगवान ने ये समुंदर की वो लहरें बनाई हैं. As I walked barefoot on the sand, feeling each wave foam upon my feet, and I heard the sound of the waves hitting the cobalt rocks and the cool breeze that gently played with my hair locks. I looked at the setting sun, and for the very first time, I smiled. I felt Mehak is somewhere here. I walked even closer to the shore now. My feet were completely submerged in the roars of the waves. She approached me and gently whispered, Mehak, सुनना, चल, साथ में castle बनाते हैं. So that's the first thing I did. I cleaned the dark, the lonely, and the scary place to now make a space for a castle only for love, no toxicity, and self-respect. With my tippy toes, I wrote a couple of words and phrases that resonated with words and actions regarding self-punishment, self-harm, and insecurities. Bus, and I watched the waves crash, each and every bit of them. They came at a roaring motion and eventually faded, taking away the wounding pins of my life.
एक शायरी लिखी है। अर्ज है, समुंदर में फना होना तो किस्मत की बात है। समुंदर में फना होना तो किस्मत की बात है। जो मरते हैं किनारों पे, दुख उन पे होता है। After we built that beautiful castle, she walked me at the end of the shore and gently made me sit down. She said, महक, सुन, हम बेशक दिखते अकेले ज़रूर हैं, पर अपने आप में ही एक कारवां सदिए चले रहते हैं. And that's the moment I felt a drop of tear roll down my cheek. और एक लहर आई और बड़ी शानदारी से बोल के गई कि महक, जितना रोना था रो लिया, हाथ पकड़ अपनी महक का और चल हमारे साथ. और बस, that's when I knew what it feels like to build a self-respect from scratch. हाँ, मेरा कासल शायद वापस टूट जाएगा, पर इतनी हिम्मत तो ज़रूर लेके आई हूँ कि उसको वापस मैं ज़रूर बना दूँगी. Thank you. This was my time. काफ़ी महकदार परफॉर्मेंस आपने की है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइटिंग फॉर मैम? 6 months. 6 months. और इतना महकदार परफॉर्मेंस. Guys, round of applause for महक. ब्यूटीफुल. मेरी एक्स का नाम महक था. सेम. सरनेम बता ब्रो. हाँ, नहीं बताना चाहिए, रिकॉर्ड हो रहे हैं. मैं तो मजाक. मैं बता दूंगा ना शो के बाद. इंस्टाग्राम हैंडल्स एक्सचेंज करते हैं. तेरा और मेरा है, महक का नहीं भाई. ये गलत ही टेंशन पे चला गया. You guys having fun? Yes. We're not even halfway through the show, so y'all better be having fun. I'm kidding. You guys ready for the next act? We're just going to keep it rolling for a bit, and then I'll come back and talk to some of y'all later on. So, can we have a huge round of applause for our next act? Yes. Please welcome on stage. मेरा दोस्त, मेरा भाई हर्ष मेंगी. Keep it going until he comes on stage, guys. Come on. सबसे पहले तो यार अर्श के लिए एक बार जोरदार तालियां यार. मतलब एक साल में जो ग्रोथ अर्श है यार. एक बार जोरदार तालियां अर्श के लिए. तो एक गज़ल से शुरू करते हैं. तो जहाँ तक पहुँचे, जिसका दिल टूटा है, मेरे को वहाँ से दाद चाहिए. जिसका नहीं भी टूटा, टूटेगा तो वहाँ से तो हाँ, मैनिफेस्टेशन, तो वहाँ से भी दाद आनी चाहिए. देखिए कि मतलब कि खुदा मुझे बस ऐसी तकदीर अता करे, कि खुदा मुझे बस ऐसी तकदीर अता करे, मैं जिससे करूं मुझे उससे वफ़ा मिले. मैं जिससे करूं मुझे उससे वफ़ा मिले. और मैंने ज़िंदगी ढूंढ ली है एक शख्स में अपनी, कि मैंने ज़िंदगी ढूंढ ली है एक शख्स में अपनी. काश उसे मुझ में मुस्कुराने की वजह मिले. काश उसे मुझ में मुस्कुराने की वजह मिले. और कभी रूठूं मैं तो वो भी मनाए मुझे. कि कभी रूठूं मैं तो वो भी मनाए मुझे. मेरे खफा होने पर वो ना खफा मिले. मेरे खफा होने पर वो ना खफा मिले. और अकेले काट लेंगे ज़िंदगी बिना किसी सहारे के. कि अकेले काट लेंगे ज़िंदगी बिना किसी सहारे के. कोई ना मिले पर अब ना कोई बेवफा मिले. कोई ना मिले पर अब ना कोई बेवफा मिले. और अदालत लगेगी उस रिश्ते की जब भी कहीं, कि अदालत लगेगी उस रिश्ते की जब भी कहीं. तुझे बख्श दे खुदा और मुझे सज़ा मिले. तुझे बख्श दे खुदा और मुझे सज़ा मिले. और यहाँ मतलब से तो दुनिया मिलती है मुझसे. यहाँ मतलब से तो दुनिया मिलती है मुझसे. काश कोई तो हो जो मुझसे बेवजह मिले. काश कोई तो हो जो मुझसे बेवजह मिले. और मांझे ज़िंदगी के लिपट रहे हैं आपस में. ये शेर सुनिए कि मांझे ज़िंदगी के लिपट रहे हैं आपस में. काश मेरी भी पतंग को कभी हवा मिले. काश मेरी भी पतंग को कभी हवा मिले. बहुत शुक्रिया. यहाँ पे किसी ने बात की थी कि अलग है ना, गांव से आए हैं, शहर से आए हैं. तो उसको एक छोटा सा शेर है कि भीड़ बड़ी है बड़े शहर में,
कि भीड़ बड़ी है बड़े शहर में, यहाँ अपना मेरा कौन है। कि भीड़ बड़ी है बड़े शहर में, यहाँ अपना मेरा कौन है। सब बनते मेरे अपने हैं, पर अपना मेरा कौन है। सब बनते मेरे अपने हैं, पर अपना मेरा कौन है। एक और टू लाइनर है कि मोहब्बत का पता नहीं, कि मोहब्बत का पता नहीं, तुझसे कशिश बेहिसाब है। मोहब्बत का पता नहीं, तुझसे कशिश बेहिसाब है। तेरे ख्वाब करूं पूरे, मेरा बस इतना सा ख्वाब है। तेरे ख्वाब करूं पूरे, मेरा बस इतना सा ख्वाब है। और बहुत शुक्रिया। एक आखिरी शेर फिर आप सबसे इजाज़त की। देखिए कि मैंने चिंगारी को आग होते देखा है, मैंने चिंगारी को आग होते देखा है, कई लाख को राख होते देखा है। मत गुरूर कीजिएगा अपने रुतबे का, कि मत गुरूर कीजिएगा अपने रुतबे का। मैंने जुगनू को सूरज और सूरज को खाक होते देखा है। मैंने जुगनू को सूरज और सूरज को खाक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। सबके दिल टूटे हैं क्या? Who's in a happy relationship? Raise your hand. पार तू मत रेस करना, ध्रुव सॉरी तू मत रेस करना। कोई नहीं है। फक भाई, एक काम करते ना, ओपन माइक को टिंडर बना देते। छोड़। You guys ready for our next act? Yes. Yeah? Yeah? So, हाँ पहले एडजस्ट कर लो अपने बैग्स। टाइम ही टाइम है हमारे पास। ये हमारी है यार, नहीं जाना हमें कहीं। सोते नहीं। Ready? So the next person I'm about to call, I'm sorry I'm a little biased towards her because I've seen her grow for the last 1 year. She's one of my favorite artists. She just finished a solo actually. She did her first ever solo show. And it's very important for an artist to do a solo show. So can we have a huge round of applause on the fact that she did a 1 hour, guys? 1 hour? It's a lot. So can we have a huge round of applause and welcome on stage our next performer for the evening, Kajal. Arey, keep it going, guys. Hey, 1 minute. Hi. Oh, I'm so excited to be here. I'm back at Habitat after a while. Always good to be here. Always good to watch Harsh. So happy National Poetry Writing Month, guys. Do you all know what's it? Yes. Okay. So April is celebrated as National Poetry Writing Month, where you're supposed to write every day and stuff. And personally, I've been following it since a very long time because I've been writing every day for like a year and 6 months. But I love NaPoWriMo because it just brings the entire community together, and there's this magic in the air which makes you want to challenge yourself and write things that you would not usually write, or write in formats that you would not do. So I asked my friend for a prompt. She gave me a beautiful prompt called Comfort Food, and I decided to twist it around completely and just enjoy. So I really enjoyed writing this piece. I hope you'll enjoy listening to it. It's called A Defense for Dal Chawal. Shadi is dal chawal for 50 years till you die. Your Honor, my clients, Mr. Dal and Mrs. Chawal, are law-abiding citizens. They stay in their lane, contribute to the community, yet everyone brings them down. Their love is questioned. Affairs are made up. My clients, Mr. Dal and Mrs. Chawal, have been married for many, many years. 973678216437092217 to be precise. It was a love at first taste. Order. 1 plate dal chawal. Maintain decorum. Apologies, Your Honor. Mrs. Chawal has many admirers. Mr. Rajma, Mr. Sai Bhaji, even Miss Sai Turi. But Mrs. Chawal finds comfort and safety in her husband, Mr. Dal. Your Honor, I find comfort and safety in this union. After a long week at work and some lethargy on Saturday, on Sundays I crave a pizza or even a shawarma or even a chicken salad. But when I learned that dinner had been prepared in the morning itself, I sigh. But then I learned that dinner is dal chawal. You would think my heart would skip a beat. Your Honor, that's untrue. My heart doesn't skip a beat. My heartbeat stabilizes, for I feel relaxed. Dal chawal is comfort. The long grains of Mrs. Chawal and the yellow glow of Mr. Dal, an aroma rising from them reaching straight to my heart. Their union tastes like love. Their union tastes like beauty, Your Honor. I can't prove this in court, but I'm sure that even our gods felt happy when their moms fed them dal chawal. Mr. Dal and Mrs. Chawal,
scrunched up in my mom's hands when I have a 104-degree fever and she attempts to soothe me. Mr. Dal and Mrs. Chawal waiting on my plate after I've had a long day, waiting to restore my energy, calm my tired heart the same way a partner ought to do. Your Honor, if Shadi is like 50 years of Dal Chawal, then this case, this speech, this poem is a defense for marriage too. Mr. Dal and Mrs. Chawal are the best couple I know. They bring me safety, they bring me comfort, they are my definition of comfort food. Thank you. अमेजिंग राइट दाल चावल पे भाई मेरा एक दोस्त है जो पोएट्री लिखता है वो लिखता है डायरिया पे टॉयलेट पे एसिड रिफ्लक्स पे ये लिखती है उसके व्हाट लीड्स अप टू द एसिड रिफ्लक्स व्हाट लीड्स अप टू द डायरिया ये इस पे लिखते हैं क्या बात है गाइस ब्यूटीफुल मैं तो एक कहानी सुनाने वाला था अभी प्यार पे बट मैं सोच रहा हूँ कि दाल चावल के बाद टेक्निकली दाल चावल भी प्यार ही है करेक्ट दाल चावल भी प्यार ही है तो कॉल कर लो पहले कोई टेंशन नहीं कर लो ये फ़ोन लगा के बैठी थी कि उठाएगा तो मैं बात करूँगी कहानी सुनोगे छोटी सी है सिचुएशनशिप्स आई जस्ट नीड टू से द वर्ड एंड एवरीवनस लाइक हाँ मेरा भी कटा था basically a situationship for people who don't know is basically one-sided love. You think you're in a relationship and the other guy's like bhag chuti hai basically it's that so this story is obviously about a breakup obviously but it's not a romantic breakup. It's a platonic between two friends, two strangers in the night who became friends by sunrise. They met at a party, exchanged numbers and promised to stay in touch the next day. कौन याद आ गया भाई मैं करूं अपनी कहानी की छोड़ आप ही से बात करता हूं नहीं बात करनी शी इज लाइक नहीं यार मैं थेरेपी जा रही हूँ उससे बहुत बात करती हूँ ठीक है कहा था मैं यार हाँ they met at a party exchanged numbers and promised to stay in touch the next day as the sun rises दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल आता है क्या उसे वो बात याद रहेगी should I send a message by saying hey there it was nice to see you yesterday or should I send a message by saying hello stranger कैसे भी करके तुम उम्मीद और हौसला लेकर व्हाट्सएप पे उसका नाम सर्च करते हो एंड यू सेंड अ सिंपल हेलो भेजते ही तुम्हारी दिल की धड़कनें तेज होती है while you wait for a simple 6-letter word to pop up under her name and soon it reads online लेकिन वो देखते ही you start regretting your decision you start to think क्या उसका सामने से रिप्लाई आएगा या मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी मैसेज कर दिया था should I have waited for 3 days like how I met your mother had asked us to as your mind starts to race and your heart picks up some pace that 6-letter word turns into an even more beautiful 6-letter word and soon you see her typing those few seconds feel like hours as you wait for her to press send और अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तुम फ़ोन नीचे रखने ही जाते हो तभी एक आवाज़ आती है टिंग वो मजाक में लिखती है हे दे लॉन्ग टाइम नो सी बस यार वो देखते तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होते हैं एंड यू फाइनली टेक द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड धीरे धीरे यू स्टार्ट टू टॉक एवरी डे every hour of the day feels different every conversation has an exciting energy you start loving to learn new things about them and you can't wait to tell them about the day you had हर दिन की शुरुआत हाउ डिड यू स्लीप एंड डिड यू गेट इनफ रेस्ट से होती थी और एंड भी होप यू एट वेल एंड हाउ वाज योर डे से हर दिन के हर घंटे टेक्स्ट करते रात को घंटे बात करते बट देन इट कम्स टू अ पॉइंट वेयर तुम दोनों एक दूसरे से बात कम करते हो एंड व्हेन यू सी ईच अदर इन अ सोशल सेटिंग यू आर लाइक मैं बात करूं या ना करूं मैं पीछे मुड़ूं या बस चलता रहूं एंड दैट्स व्हेन यू थिंक टू योरसेल्फ that why did you look away when I crossed your path today? I can't believe that we decided to walk down the same road, but one of us went a different way. It's hard to comprehend that you're the same person who left everything when I needed it the most, and now, no matter how many times I try to say hello, all you tell me is adios.
ऐसा क्यों होता है? क्यों बिछड़ते हैं दो दोस्त जो बस कुछ ही देर पहले एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे? Why is it that the person you once considered the most important in your life starts putting you lower down on their priority list? They say communication is key, right? Everyone's in agreement there? They say communication is key, but then why are most of the reasons behind our fights just simple misunderstandings? तुमने जो कहा उसने क्या समझा, इसका जवाब तुम ढूंढते रहते हो और इसी जवाब के खोज में 2 मिनट का रास्ता 2 साल का फासला बन के कब रह जाता है ये पता ही नहीं चलता. You start missing a communication because of some miscommunication. Truth were understood as lies. We were just two strangers in the night who became friends by sunrise. Finding solace in each other, we wandered the streets, leaving the world behind. We danced on our feet. But then why did it hurt when a friend turned to a stranger and we started to grow apart? I just wonder what it will take for us to go back in time and begin from the start. And that's the problem. That's the problem. Sometimes the person that breaks your heart isn't your lover, your partner, or your family. It's a person you consider a friend. You start missing the person they used to be while you hold on to your past. You start reminiscing the times you had together, wondering why it didn't last. You might have 2,000 friends on Facebook, but they're just 2 friends you want to face. Waiting to book some time with them, you find out that you've been replaced. You're angry, you're heartbroken, you're frustrated, and you start to think if you might have been the problem. Self-doubt और self-belief के बीच में लटकते हुए तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम तो उसे सिर्फ खुश देखना चाहते थे. तभी दिल से एक आवाज़ आती है कि चल रहने दे छोड़, कि चल रहने दे छोड़. क्या हुआ अगर तुम उसे वो खुशियाँ नहीं दे पाए? एंड में तुम तो उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहते थे ना. तुम तो उसे सिर्फ मुस्कुराते हुए देखना चाहते थे ना. Even if it meant that you weren't the reason behind that smile. Thank you. Keep the applause going for our next performance. Yeah? Yeah? ऐसे नहीं बुला रहा guys. थोड़ा energy, थोड़ा enthusiasm. Come on, keep it going, keep it going, keep it going. For the next person who every Simran is in search of. Raj. So can we have a huge round of applause and welcome Raj on stage. Hey guys, my name is Raj and I'm an actor and I occasionally write when people don't let me act. So हम सबको कबाड़ी वाले के बारे में तो पता होगा. सबके घर में कबाड़ी वाला आता है, कबाड़ लेके जाता है एंड एक्सचेंज में वो हमें कुछ पैसे दे जाता है. So this poem is about a कबाड़ी वाला. Hope you guys like it. अखबारों में छपे जंग के ऐलान को, पुराने रेडियो में बजे दंगे की खबर को, स्कूल में दोस्त के साथ बनाई ड्राइंग को, तुम्हारी हर याद चाहे अच्छी या बुरी हो, उसे तोल के अपने साथ ले जाने आया. आया देखो आया, कबाड़ी वाला आया. कुछ ख्याल थे तुम्हारे, कुछ अल्फाज थे उसके, तोहफे कुछ थे जज्बातों में लिपटे. उन चिट्ठियों का कागज़ पीला पड़ गया, तोहफे वो रह गए काई से सने. उन यादों का भार तुमसे खरीदने आया. आया देखो आया, कबाड़ी वाला आया. वो गलियों मोहल्लों से गुजरता है, छोटे मकान और बड़ी कोठी का अंतर भांपता है. किसी बेरंग तस्वीर या भरी डायरी का मोल समझता है. कीमती याददाश्त को तुमने लावारिस करार दिया, उसका सही भाव लगाने. आया देखो आया, कबाड़ी वाला आया. फोन में कल परसों का डेटा संभाला है. आखिर उन कोडाक तस्वीरों का वक्त आ ही गया है. स्मार्ट वॉच में तुम्हारी धड़कनों का हिसाब है, मगर दादू की भुलाई सोनाटा में उन्हीं धड़कनों का बसेरा भी है. अमूल्य यादों का घाटे में सौदा करने आया. आया देखो आया, कबाड़ी वाला आया. तुम समझते हो उसे बेगानी बस्ती का बाशिंदा, मगर वो सिर्फ एक रहगुजर है हमारे अतीत का. सोने का भाव तुम लगाते हो, जो मूल तुम ना देख पाए वो उसकी आंखों में खोजते हो. जो मूल तुम ना देख पाए वो उसकी आंखों में खोजते हो. तुम्हारे बेपरवाह मिजाज की जिम्मेदारी उठाने आया. आया देखो आया, कबाड़ी वाला आया. थैंक यू. Keep it going. कितना नाम सुन रहे हैं यहाँ पे?
हैंड उठाओ भाई, मिल जाएगी यार तेरा सिमरन, तेरी सिमरन, टेंशन मत ले। गाइस आई एम फ्रॉम साउथ बॉम्बे, तो मेरा थोड़ा हिंदी इज अ लिटिल भैया, है ना भैया, आप चलोगे हमारे साथ? या डूड, एंड फॉर द लास्ट 6 years I was in bloody Canada, so my Hindi never improved. You shit. थोड़ा बात करें लोगों से। Hi ma'am, sorry I just picked on you because I saw you sitting. What's your name ma'am? Anushka. What do you do ma'am? Where? Mithe bhai. And what are you studying? These are my profiles. अगर कोई ऑडिशन, राज जी आप भी प्रोफाइल्स दे देना बाद में, फिल्म पढ़ रही है। एंड आर यू परफॉर्मिंग? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइटिंग फॉर? Since I was a kid, like 10 years old. एंड हाउ ओल्ड आर यू? 8 साल से, like when you were 8? Yeah, I mean 10 years, yeah, I mean, 9 or 10 years. 9 या 10 years old. तब क्या लिखते थे आप? तभी भी आपके दिल में प्यार था, तभी भी हार्ट ब्रेक था। I used to talk a lot, so I also had a lot of words. Which is why I became a host, dude. People are like, oh, you're so good on stage. I'm like, nahi bro, मुझे attention चाहिए. Then I started therapy. Yeah. Huh. And what do you do? Film production, you said. You enjoying it? Of course. How many of you guys enjoyed what you studied? Raise your hands. The fuck? You guys had a happy childhood? What was that like? No, this is not therapy. Gotta keep telling myself that. Huh. And who are you here with? Have you come with some people? I love how वो बीच में बैठी है। देख भाई, मैं बीच में बैठा हूँ, 2 लोग इधर, 2 लोग इधर। Entry way, like you enter also with you in the front, 2 here, 2 here, full. No? And you guys have come to support? Why? Sorry. I just get jealous, dude. My friend was supposed to come. My best friend in the entire world, dude. If he's watching, I'll show it to him. I'm meeting him after the show. I want to show this stream to him. Rohan, you suck. हैदराबाद से आए 2 दोस्त इसके लिए, तो मेरे से 10 मिनट दूर रहता है, bro. Yeah, he was really kind. He surprised me. He's studying in UK right now, and last week he surprised me. He was not supposed to come back till September, but he came back, and I was like, fuck. Why? So I told him, come for the show. He's like, yeah, bro. I'll come for the show. 6:30 messages me. Bro, सुन. अरे यार, you know मम्मा ना, उनका काम आ गया है। Like, चल ठीक है, अब मम्मी के सामने कुछ बोल नहीं सकते, माँ तो माँ होती है। Ready for our next act? Now, I have forgotten the name. Okay? No. I'll call on random. Who all are here to perform? Raise your hands. So can we have a huge round of applause and welcome on stage Vinay? Keep it going. No. Keep it going. हाँ wow. तो आई एम विनय चौहान, मैं अंबर पूजा नाम से लिखता हूँ। पहले तो थोड़ा कंफ्यूज था कि ये क्यों रहते हैं, तो बाद में पता चला कि ऑडियंस की आवाज़ के लिए रहते हैं, तो पहले तो उसी में कन्फ्यूजन चला गया। तो अभी हाल ही में मैं सफ़र कर रहा था, तो सफ़र में मुझे एक अंकल मिले थे, सर थे वो। बातचीत बड़ी, थोड़े सोच हमारी मिली। तो जाते जाते उन्होंने एक लाइन कही थी, बहुत अच्छी लाइन कही थी। उनके अल्फाज, उनके शब्द मुझे जैसे कि तैसे याद नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा कि इम्पैक्ट वही रहे। थोड़ा प्यार के बारे में उन्होंने कहा था कि एक उसी से होगा तो वो प्यार होगा, एक उसी से होगा तो वो प्यार होगा, प्यार कहलाएगा। किसी और से उम्र भर बस जिस्मबाजी रहेगी। तो उसी के ऊपर मेरा एक शेर है जो मैंने उससे पहले लिखा था कि तेरे बगैर किसी और की अब मुझे ज़रूरत नहीं लगती, कि तेरे बगैर किसी और की अब मुझे ज़रूरत नहीं लगती, मेरे बदन की आग अब मुझे आग नहीं लगती, कि तेरे बगैर किसी और की मुझे ज़रूरत नहीं लगती, मेरे बदन की आग अब मुझे आग नहीं लगती। वैसे छूती है कोई और भी मुझे, वैसे छूती है कोई और भी मुझे, और पूछती है
क्या हुआ? क्या अब तुझे ठंड नहीं लगती? उसी से एक मिलता जुलता शेर है कि तुम्हारे आंसू छुपाने कब से लगी हो, तुम्हारे आंसू छुपाने कब से लगी हो, किसी और की क्या हो गई पराया समझने लगी हो। तुम्हारे आंसू छुपाने कब से लगी हो, किसी और की क्या हो गई पराया समझने लगी हो। और क्या लगता है हम छुएंगे अब तुम्हें, और क्या लगता है हम छुएंगे अब तुम्हें। और फिर ना जाने तुम हमें ये क्या समझने लगी हो कि तुम्हारे आंसू छुपाने कब से लगी हो। एक है थोड़ा अपना भी कटा है तो उसी के ऊपर है कि खिड़की से टकराने वाली धूप अब नहीं आती, खिड़की से टकराने वाली धूप अब नहीं आती, कोई आए ना आए उसकी याद अब नहीं आती। खिड़की से टकराने वाली धूप अब नहीं आती, कोई आए ना आए उसकी याद अब नहीं आती। वैसे आता है गली में वो डाकिया अब भी, वैसे आता है गली में वो डाकिया अब भी, पर उसके हाथों हमारे नाम की चिट्ठी अब नहीं आती। कोई आए ना आए उसकी याद अब नहीं आती। और ये है किसी के लिए भी समझ लीजिए। आई लव यू। मेरे मिसरे तुम्हें चूपते होंगे, मेरे मिसरे तुम्हें चूपते होंगे, तेरे जहन में दौड़ते होंगे। मेरे मिसरे तुम्हें चूपते होंगे, तेरे जहन में दौड़ते होंगे। ये बादल जो दबाए रखे हैं सीने में तूने, मेरा दावा है ये तन्हाई में ज़रूर बरसते होंगे। मेरे मिसरे तुम्हें चूपते होंगे। एक अभी है शायद टाइम, तो और एक सुनाता हूँ। 1 मिनट है। 45 सेकंड। चलो एक लास्ट वाला कह देता हूँ और निकल जाता हूँ यहाँ से। मैं 45 सेकंड है तो भी और कम 40 बचे। ये सुना होगा, ये शायद आपने रील्स पे ही सुना होगा। ये मैंने भी मेरा ही शेर रील्स पे सुना, तब जाके पता चला यार मेरा शेर पॉपुलर हो चुका है और मुझे ही पता नहीं है। कि दिल टूटा हमारा और हम भी रूठे, कि दिल टूटा हमारा और हम भी रूठे, हम किसी के आदत को प्यार समझ बैठे। बाय। क्या बात है। बैंक में भी इतने ख्याल आते हैं, मुझे पता ही नहीं था यार। शिट, अब तो मैं सच में भूल गया हूँ। हर्ष पास कर देना। सॉरी गाइस, इतना मजा आ रहा है ना तुम लोग को देख के कि मैं भूल ही जाता हूँ कि कौन है अगला। चलो, यू गाइस हैविंग फन? सच्ची? ठीक है। सो रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्ट? यू गाइस नो व्हाट टू डू। You guys know what to do. Keep it going for खुशी। दारू बहुत पी रहे हो आप। यहाँ पे बटन है, ब्रह्मास्त्र वाला नहीं। यहाँ से ईशा कोई नहीं मिलेगी। Hi, this is Kushi. Hi. Before starting, I just want you all to close your eyes for a moment and think about that one person who is not a part of your life anymore. Whom you miss sometimes. You feel like texting them or giving them a call. Your heart says that you should, but you're not. इस क्यों का जवाब भी तो नहीं है। इतने अनजान कब हुए हम, इतने लाचार कब हुए हम। मन करता है तुमसे बतियाऊं, काश कभी मैं तुमसे मिल पाऊं। क्या हम कभी फिर मिल पाएंगे? क्या फिर वही पुराने किस्से दोहराएंगे? शायद नहीं। नफ़रत तो नहीं है, शायद प्यार भी नहीं। फिर क्यों दिल तुम पे ही आकर अटक जाता है? क्यों मन तुम्हारा नाम सुनकर मचल जाता है? इस क्यों का जवाब भी तो नहीं। ये इंसान ऐसा क्यों होता है जो मन में है क्यों नहीं बोल देता है? क्यों घुट घुट कर जीते हैं हम? क्यों अपने जज्बात पी लेते हैं हम? इस क्यों का जवाब भी तो नहीं। My next piece is about trusting someone. Like love comes in phases and trusting is a big part of it. So
And then I got naked when it was you on the other side of the phone. I was sobbing heavily while you were calming the storm. And I was slowly trusting you, letting you see my scars, letting you touch my fears. That day you didn't touch me physically, and yet touched the entire me. You touched my soul. You filled my scars with love, with care, with trust, and I got naked completely. Thank you. आजकल के बच्चे I know you're 21, bro. I act as if I'm too old, man. I don't get this generation only. I'm 25, but I fucking feel like an old soul, man. The other day, I'm so old, I literally sprained my back and I was on bed rest for 1 week the other day because I went go-karting. मैं कुछ किया नहीं, मैं गाड़ी चलाया and bed rest. सब ठीक? आत्मनिर्भर? Cool. Guys ready for our next act? So can we have a huge round of applause and welcome on stage Anushka. Keep it going until she comes on stage. हाँ भाई ले video. ले. ये तो 4 लेके आई है bro camera. Hi guys, I'm the production girl. Send your profiles in. Trigger warning, I'm going to talk about something really deep and intense. And I'm going to talk about abuse today, emotional abuse, especially from the people who have given you birth. And this is just a conversation with me and that person, which I've visualized pretty well. And this is how it goes. How do you reach halfway hell, you ask? By never loving yourself enough, I said. And how do you love yourself when all your life you've been taught to breathe underwater? By choosing to choose the exit sign of life, I said. In short, I was asking her to let go of the pain that she was holding on to. You once used my name as a curse, and today on your deathbed, that is the only name you search for. It started with bloodshed for me and ended with the death of me. The highest bidder of my life sold me for a husband. You said, but don't we always have freedom to choose? I questioned your crisis. You always blamed me for the word games the world played with you. Why shouldn't I? You're the bane of my existence. Mama, what if I catch the train of death? Would you forgive me still? My mother, she turned around, looked at me from afar. From the bars, she locked me in, tossing the keys to the fate of life, not realizing fate will not choose the road that she chose, leaving me caged forever. I was given a new cage every new year. The cage just grew bigger and bigger, just like my crushed dreams. What is a womb if not the warmest bed of all times? But what is life if not the greatest tragedy of human history? The blisters that I hold on to are the paintings of your scarred soul in my mind. Mama, but you don't understand. Saying in the cry tone, I cry out loud. I'm not a demon's child, I'm yours. Can you please hug me? But I know that if she hugs me like the coziest womb that she is, I will end up bleeding her and her wounds like the scar that exists in my soul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anu, kahan hai? While she wishes, it's not the hitting again. Anushka wishes for it very bad. For rubbing of pencil letters with her saliva, her mother is desperately waiting to feed a child she thinks is a demon. A battle that needs to be lost, a blood that needs to be sacrificed. You know that the moment your decibels go high, my wish to live goes low. You twist your knife at my deepest hurt. Even when you know that it makes me bleed the life out of me, even when you know that I'm just a child, you push me on the corner of a table that we selected, but you treat it like your battlefield. One day, she takes me to a room and says, Anu, do you want to sleep? I said, forever. With a once in a blue moon smile of mine, she takes her knife all over again and twists it at my deepest hurt. In short, she wants me to live life dead.
If you smile, you must smile only when I give you the window to breathe. If you must breathe, only when the green signal hits on your road from mine. She asked me to be the part of a ship which promised way more happiness than this. But I don't want to be a part of your sea because I am your nemesis. Mama, says the 3-year-old me, wishing she had flowers for my deepest hurt. Until one day I grew up and realized what my mother once said. She said, breathe under water till your eyes stop blinking and show you the darkest shade of black and a piece of heaven. Thank you. That was very brave of you, Anushka, to actually break the monotony of heartbreaks and come up with something so serious and something that people don't talk about. So I think it's very imperative. So huge round of applause for Anushka once more. मैं jokes नहीं crack करूँगा, मैं आगे बढ़ता हूँ. I think it's important to just keep the show flowing. So are you guys ready for our next act? Yes. थोड़े नहीं. Keep it going for Aman. आइए सर. महक के एक्स बॉयफ्रेंड. आपके नहीं. नहीं. ये सोच रहे हो कि मेरी एक्स भी आ गई. Well, not the way I want to be known, but ठीक है. So my name is Aman, and I'm a chartered accountant by day, and by night basically I'm an insomniac. Shower only sometimes, like once in a while. So this is basically a series of events about a beautiful girl. So basically, when you really like someone, you like to create imaginary scenarios in your head कि ये करने मिल जाए, वो करने मिल जाए. So one of such scenarios I created. So we were together in one class studying CA finals, and one such scenario I created in my mind I wanted to do with her was just walk in the rain with her just under one umbrella. Is what ख्वाब सर, ख्वाब पूरे नहीं हुए. So I tried my best. We were friends, so I purposefully forgot my umbrella. I just used to keep it inside my bag कि आज तो नहीं लाया. But something or the other thing used to happen. Sometimes she used to go early. Sometimes there was some friend कह रहे चल मेरे साथ चल. तो कभी हुआ नहीं. और कभी eventually when everything got set right, but somehow it didn't rain. So it didn't rain. Did not. We were going together, but didn't. In Mumbai during monsoon. So मतलब समझ लो. हाँ. So उस पर ये लिखा था कि फ़कीर से शहज़ादा बनने का मौका दे जाती है ये किस्मत भी कैसों को क्या क्या दे जाती है. फ़कीर से शहज़ादा बनने का मौका दे जाती है ये किस्मत भी कैसों को क्या क्या दे जाती है. पर जिस दिन बिन छतरी में उससे मिलने निकलता हूँ ये मुंबई की बारिश भी धोखा दे जाती है. But then slowly, steadily, things moved forward and we started talking and everything. But sometimes there used to be small fights, not fights, actually arguments. And she used to be like, okay, now I don't want to talk to you for a while. I don't want to meet. Sunday ka plan cancel. I'm like, ठीक है, बात नहीं करनी ठीक है, but Sunday का plan cancel. Let's not do that. So उस पे ये लिखा था कि अपने सब्र को मैं तेरे लिए परखता रहूँगा. अपनी जान तेरी हथेली पर मैं रखता रहूँगा. अपने सब्र को मैं तेरे लिए परखता रहूँगा. अपनी जान तेरी हथेली पर मैं रखता रहूँगा. और तू नाराज़ है तो ठीक है, मत करना मुझसे बात. तू नाराज़ है तो ठीक है, मत करना मुझसे बात. बस मिलने आ जाना, मैं तुझे तकता रहूँगा. So lastly, when I'm sitting with my friends and मतलब pegs बन रहे होते हैं, बातें हो रही होती है, तो they usually ask कि तू कब से शायर बन गया, तू कब से लिखने लगा. तो लाइक कि शायर कुछ तो हूँ नहीं मैं, सिर्फ एक इंसान के लिए जो थोड़ा बहुत ख्याल आते हैं, जस्ट आई पोर इट डाउन. सो उस पर लिखा था कि तुम मिली थी जहाँ आखिरी दफ़ा वहाँ से लौट कर मेरी रूह नहीं आती. तुम मिली थी जहाँ आखिरी दफ़ा वहाँ से लौट कर मेरी रूह नहीं आती. कोशिश तो करता हूँ बहुत पर किसी और के लिए वो जुस्तजू नहीं आती. तुम मिली थी जहाँ आखिरी दफ़ा वहाँ से लौट कर मेरी रूह नहीं आती. कोशिश तो करता हूँ बहुत पर किसी और के लिए वो जुस्तजू नहीं आती. और जला के राख कर दी मैंने वो हर किताब मेरे गज़लों की. जला के राख कर दी मैंने वो हर किताब मेरे गज़लों की. जिसके हर पन्ने से तेरी खुशबू नहीं आती. जिसके हर पन्ने से तेरी खुशबू. That was my time. Thank you so much.
महक अगर तुम देख रहे हो, क्यों छोड़ा यार? अच्छा, ब्रेकअप म्यूचुअल था? सब बोलते हैं नहीं था. I don't want to get into it then. मेरा ब्रेक, I had a 6-year relationship guys. मेरा ब्रेकअप म्यूचुअल था. We mutually decided कि मैं चूतिया हूँ. तो सब सेट हो गया था. सिमिलर ना? हाँ सही है सही है सही है. क्या सुनाया यार आपने? कहानी सुनोगे? लेकिन उसके लिए ना तुम लोग को आना पड़ेगा 6th मई को ना. 6th मई को क्या हो रहा है तुम लोग पूछोगे? मेरा पहला सोलो शो. It's happening here at the Habitat on 6th of May on Saturday. Tickets will be in my Instagram bio. So you have to follow me to kind of, get the bio link. So you guys can come. It's titled Kya Pata Kal Ho Na Ho. It's on the premise that you're not guaranteed tomorrow. Tomorrow is always going to be a day away. तो जो भी करना है आज करना है यार. बाकी की दुनिया गई भाड़ में. ठीक है? So I hope you guys can make it. लेकिन अब असली की कहानी सुनाता हूँ. I just want to do a subtle plug कि मेरा solo show आ रहा है. And what is the cringiest thing you guys have done for love? हाँ, tell me. आप MBA क्यों नहीं कर रहे? Made a PPT. Tell me something about that PPT. Basically, we were going our ways, and I did ब्रेकअप के बाद बनाया है आपने PPT? sort of. I'm so sorry. हाँ बताओ. And then it's just a very, I'm embarrassed about it. इसलिए cringy पूछा मैंने. I don't think so. We need the details. हाँ, we don't. Yeah, it's just, I'm gonna stick. और किसी ने? Anyone else? Anyone else? Anyone else? It's a safe space. Record. It's not happening like it's getting recorded or anything. But anyone else? Cringiest thing? Anyone else? No. आप लोग का intense discussion चल रहा है back. Hi ma'am. आप जो हंसी जब मैंने बोला we met at a party. Hi ma'am. What's your name? Dhriti. हाँ. Oh wow. My younger sibling's name is Dhriti. Yeah, she's 14 but. हाँ. Cringiest thing बताओ. Not really. We were discussing that only, that we haven't done anything cringy. और आप परफॉर्म कर रहे हो ना धृति? पता है मुझे. ये क्या बोलते हैं? हाँ, अंतर्यामी. मैं अंतरराष्ट्रीय बोल रहा था. Bro, Brahmastra na is full of red flags. In the first 30 seconds, Alia Bhatt gets mad at Ranbir Kapoor because he didn't invite her to a party. And I'm like, bro, you just met him. Like, क्या हूँ तुम नहीं, क्या हूँ मैं? चूतिया है तू, भाग, चमन. Bro, she got mad, यार. Toxicity की भी तो हद होती है. So the cringiest thing I've ever done. So a little bit about me. I went to an all-boys school until the fifth standard. Fifth standard में मेरे पेरेंट्स को पता चला कि भाई इसको अगर मूव नहीं करेंगे प्रॉब्लम होगी लाइफ में बाद में. And also I live in a joint family. We're about 13 people at home. Yeah, and a dog. 13 people. I'm not rich. I'm just stuck. I'm Punjabi. So yeah, 13 people in our house, and I grew up with 4 sisters, including my sibling and another cousin brother of mine. So I didn't know how to talk to girls, dude. Like the only conversation I had with girls was with my sister. If she took a chocolate, I would pull her hair, whack her. She would pull my hair, scratch me. And I realized I can't do that in real life. Otherwise, there's something known as an FIR. और मेरी फट जाएगी. So then when I moved to in the 6th grade, when I moved to a co-ed school, I realized that there's another species altogether apart from my sisters that also coexist with humans. And they're called women. No offense to feminists, I am a feminist myself, but at 6th standard you don't know, right? बच्चे हो तुम. And I came from an all-boys school, तो rowdy था, rough था, angry, like not angry, but loud था. अभी भी हूँ, ऐसे कुछ है नहीं. But all-boys school से आया था. And it's very difficult, talking to these South Bombay girls. Because एक तो ये South Bombay के girls सारे कौन है? रजत भाई आए हैं? आइए सर. हाँ, बात करते बाद में आपसे. But हाँ, improve, like I said, South Bombay का school. तो अगर इनको impress करना है तो किडनी बेचनी पड़ेगी. तो ये लोग impress होंगे नहीं. तो 6th standard में ना, I decided I'll also talk to girls. But every girl was just like, bro, you're too loud. तो 6th standard से जब 8th standard, 9th standard में you see your friends, your peers date. And initial there's crush. They start having that so-called relationships.
आज तो आई वुडंट कॉल इट अ रिलेशनशिप, बट तब बोला था यस आई एम इन लव विथ हर. व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर? वो फ्री पीरियड में मेरे साथ बैठती है. थोड़ा लाइक एंड it's difficult, yeah, being the 5th, 7th, 9th, 11th wheel when you bloody go out. तो 11th standard में क्या हुआ ना, 11th standard में 10th के बाद कुछ बच्चे स्कूल से चले गए and a bunch of new students came in. So I decided that I will get a girlfriend now. I'm tired of paying stag entry, bro. Like कितना stag entry pay करोगे? So I decided I'm gonna get a girlfriend. And this one girl came in to our school, and as soon as I saw her, I was like, like तुम ही हो सब कुछ. Like literally, I went from Arshmatra to Brahmastra Ranbir. Like क्या हो तुम? That was my first instinct. But I was like, नहीं sakti, you know, we're gonna maintain some attitude and then text her. तो तभी था BBM का ज़माना. And मैंने WhatsApp पे उसको मेरा BBM पिन दिया. So बोला तो क्या कर रहा है? WhatsApp पे directly मैसेज कर. Like हाँ, fair point. So we got talking and everything. And I'm not going to reveal her name, so we'll call Simran Prachi. Cool? तो जब सिमरन को मैंने मैसेज किया एंड आई स्टार्ट टॉकिंग टू एंड एवरीथिंग 11th स्टैंडर्ड में आई वाज लाइक ब्रो यही बनेगी. लाइक लिटरली मैं अली बन गया था ब्रो. लाइक इन माई हेड आई वाज लाइक तू ही है मेरे बीवी, तू ही है मेरे बच्चों की माँ, मेरे ग्रैंड पोता पोती के जो भी बोलते हैं उसको हिंदी में, समझ जाओ भावना. सो बातें बातें में पता चला कि उसका बर्थडे आ रहा है. We started talking on WhatsApp and I found out that it's her birthday. I was like, ठीक है, that's cool. But she's like, no, I'm not excited. I was like, क्यों? ठीक है, मिल के बात करते. So she asked me, she's like, would you like to see the new Minions movie with me? तब Minions निकली थी. I was like, I'd love to see the new Minions movie and we should name our kids Kunal and Kiara. फट करके निकला है. तो पिक्चर में जब पहुँचे PVR सिनेमाज, उसने अपनी तीसरी दोस्त को भी बुला लिया था. Yeah, right. It's basically telling me your friend zone without telling me your friend zoned. तो जब वो आई तब मैंने पूछा व्हाई डोंट यू लाइक योर बर्थडे? आई मीन एवरीवन लव्स देयर बर्थडे. शी लाइक नो यार माय बॉयफ्रेंड ना. एंड आई वाज लाइक ओह आपका बॉयफ्रेंड है? शी लाइक नो 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 व्हेन आई यूज्ड टू हैव अ बॉयफ्रेंड. लाइक चलो ठीक है ना. आई थॉट गॉट रिलैक्स्ड. एंड पिक्चर में भी सबका यही होता है ना कि पिक्चर में लड़के के साथ बैठे हो, थोड़ा कर लो. I mean, I sound like a fucking molester right now, but I had a cute intention. I had an honest, cute intention. So I was like, ठीक है, why don't you like your birthday? She's like, अरे every time I've had my birthday, my boyfriend has never been in town or this, that. I said, चल ठीक है यार, इस साल अलग होगा. मैं हूँ ना, like fully. And I decided now to send her 7 gifts for 7 days anonymously leading up to her birthday. That's not the cringiest thing I've done. We're getting to it. Now you can imagine how cringe it is. Like, चल ठीक है. Now 7 गिफ्ट्स भेजने तो उसका बजटिंग करना पड़ेगा. पॉकेट मनी इतनी ही मिलती थी. तो जब बजट किया मुझे पता चला कि दैट आई वाज शॉर्ट ऑफ अबाउट 1500 रुपीज़. 1500 की कमी थी मेरे इन फॉर द 7 गिफ्ट्स. अरे क्या करूँ? मम्मी से पूछा, मम्मी ने चप्पल मार के भेजा कि भाई नो आई एम नॉट गिविंग यू मोर मनी. आई सेड इट्स ओके. नाउ आई लव्ड माई प्ले स्टेशन. I loved my PlayStation PSP. I loved it. आज उसकी वैल्यू अगर आप गूगल करोगे, ब्रांड न्यू वैल्यू आज है 5000 रुपये. आज 2023 में ये बात है 2015 की, 7 साल पहले. 7 साल पहले कम से कम 7-8 हज़ार 9 हज़ार में बिक रहा होगा ब्रांड न्यू. सेकेंड हैंड बिक रहा होगा 2,500-3 हज़ार रुपये में. मैं गया हीरा पन्ना शॉपिंग सेंटर, हाजीअली में है, साउथ बॉम्बे बॉय, आई नो. वेंट टू हीरा पन्ना शॉपिंग सेंटर और मैं 1500 में अपना PSP बेच के आ गया. I sent her 7 gifts and on the 7th day I went up to her and I was like, Simran, I love you. That's what I thought love was, right? प्यार दोस्ती है. तो I was like, I love you. She's like, oh, thank you. I was just telling my boyfriend how lucky a girl would be to have you. Now in my head I was like, you didn't say no. You didn't say no. तू बन जा. Like इसको छोड़, क्या कर रहा है, तू बन जा. कुदरत का कमाल देखो. 1 साल पहले around the same time of her birthday is in March. So around the same time of her birthday,
a friend of mine that lives in my building, he moved to London. And he comes up to me. He's like, hey, you have a PSP. I don't know what to do with these games. He gave me all the games. So if you guys have a PSP and need games and want to sponsor my solo show, selling them at $100 a pop. Thank you very much. यही थी कहानी. थोड़ी clapping चलेगी यार. मैंने PSP बेच दिया है. क्या है यार तुम लोग? Almost towards the end of the show and you guys are energy are still there or no? Love it, ma'am. What do you do? Hi, ma'am. What's your name? Vidushi. What do you do, ma'am? I'm an actor, writer, and filmmaker. Again, these are my profiles. I don't get paid. I need money. I do social media for a living, dude. And any films we've seen you in? No, I was in California, so I was doing some independent films. Ooh. Just Bombay. How long has it been for you in Bombay? 2 months. 2 months. And how long were you in California for? 4 years. Where in California? I was in LA. Of course. Stupid question. It's like, भैया तुम, it's like asking someone like, अच्छा तू actor बनने कहाँ जा रहा है? Hyderabad? Kidding. Kidding. Obviously Bombay जा रहा होगा. And any independent films that you can take names of? Yeah, done 2 films that are right now running the festival circuit. One is called Neckline. It's actually a spoken word film. Wow. All women casted. Wow. So it sort of has done well in the festival circuit. And then the other one is called How Do You Fall Out of Love with Country Music? How do you fall out of love पे छोड़ देना चाहिए था. And you should have told us all of that. I thought we've not moved on only clearly. हाँ. College humor is coming out of this film called Disruptors. I've done like a 1 seconder in that. So, but I have a really cool person in front of me. Who? Who is getting recorded? Mark Evan Jackson, who was like in The Good Place. Ah. Wow. How is he like on set? Oh, beautiful. Really lovely. Yeah? I had like 1 seconder in that. So, तो वो ऐसे yeah. That's good, yeah. That's good. Round of applause for Vidushi. And keep it going to bring Vidushi on stage. Keep it going until she comes on stage. Makeup सब ठीक है? Lighting. जब तक आ जाते हैं बात ही कर लेते हैं. क्या चल रहा है bro guys? सब ठीक? मस्त. Guys, keep it going for Vidushi. Hi everyone. How are you doing? My name is Vidushi and my introduction was just done there. I am new in Mumbai and I'm actually really loving this city. And the piece I'm going to be doing today is something I wrote long back, 5 years ago, and I'm finally trying to bring it to life. I want all the women in the house to just can you put your hands up? Amazing. I love how many amazing women are here. And I want you to put your hands up if your pants have pockets or your clothes have pockets. Okay, not bad. And are you satisfied with the size of your pockets? Great. I'm late again. Wait, I'm always late. Great. As my unpunctuality gets the better of me, running down the stairs, trying not to trip, gripping onto my phone, which at this point is going bloody berserk, buzzing bzzz, 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 pep, pep. My friend is honking and calling me at the same time. Amidst this cacophony, I run down with my keys, phone, charger, wallet, wires hanging around my arms. Just as I calm myself, my phone falls. Another crack added to the multiple cracked lines. I don't think it's the tempered glass this time. As I frantically, ungracefully, and with great difficulty open the door, you scream, "Why don't you just put it in your pocket?" Oh, why don't you just put it in my back pocket, just put it in my back pocket. I've dropped my phone on several occasions, and maybe it's just not my clumsy disposition. Maybe it's the lack of an invention, or let's say a misuse of an invention. Let me explain. There was a time in the same week where my mom, sister, and I were victims of the tiny back pocket syndrome. Some, and that too, rarely do we women have pants with front pockets. Most jeans, pants, trousers, shorts have back pocket with the space of a fingernail. So as we stuff our giant phones in our female back pockets, pull down our pants to take a piss, that wasn't our shit.
I always imagine all the phones dropped in the pot because of the tiny back pocket syndrome as Olympic divers. And the iPhone 6 has made a beautiful dive. Judges are scoring them on a scale of 1 to 10. Time of takeoff, rotations and twists. Time taken to enter the water. Time taken to come afloat. Why don't you carry a tote or a handbag or a sling bag or a backpack? Nah, just put it in my back pocket, back pocket. Just put it in my back pocket. You know, one day I put my hand in my guy friend's pocket. Ooh, it was so deep. I almost got lost inside it. Have you guys, just on a side note, have you girls put like hands in guys' pockets? God, are they deep? In them you can just curl up and sleep. Actually, it's a good pickup line. You can, instead of saying eyes, you can say, man, I got so lost in your pockets. Sometimes I think Hermione cast the undetectable extension charm. There's really no harm in trying to cram a whole universe in a pocket of a guy. Sigh. Man, you got some deep-ass pockets. So do I. If only that were true, I would invite you to. Come on, guys, you know this. Just put it in my back pocket, back pocket. Just put it in my back pocket. How much time do you have left? Okay, I think handbags are cool. Do you like handbags too? You can always match them to your shoes and make your outfits look complete. But you know, sometimes I just need both my hands to greet or to defeat or just to look neat. I think handbags are cool, but do you like handbags too? They can carry a lot of things but keep your shoulders lopsided. Don't be divided. I'm not trying to be anti-bags. It just nags at me not to have a choice. Even for the tiniest thing, I have to carry this additional burden on my shoulder. Literally, on the contrary, I think handbags are cool. But the reason I whine is because we women carry bags because of poor functional design. I should be able to just put it in my back pocket, back pocket. Just put it in my back pocket. Put it in your bra? Nah. Thank you. My pockets come till here. Like, I literally, when you said it was deep, I was like, yeah, dude, mine come till here. That's like almost 1/4 of my pant. You guys having a good time? Yeah. We've just got like, what, 4 more people or 3 more people or so. So can we have a huge round of applause and welcome our next performer of the evening? Keep it going for Rajat Sood. हेलो हाय भाई तुम बहुत ही अमेरिका हो एकदम अरे मज़ा ही आ गया भाई सुन के मैंने कहा अरे ओ माय गॉड बैक भाई मेरा तो सपना पूरा हो गया भाई बाहर जाने का ऐसा लग रहा है मेरे को वाह क्या बोल रही थी तो मैं तो मगन हो गया था भाई ऐसे लॉस एंजलिस देखा मैंने आपकी परफॉर्मेंस क्या बेहतरीन परफॉर्म किया हेलो जी नमस्ते भाई कितने लोग का ब्रेकअप हो गया और ये सबका हो गया क्या अरे भाई तुम मैंने सिर्फ नोटिस किया पैटर्न भाई तुम लोग मेरे को बताना अगर आप लोग अग्री करते हो कुछ एक्सेस चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना कर पाओ है ना एंड दे एंश्योर दैट है ना कि भाई अच्छा चल रहा है मेरा जीवन 3 महीना हो गया आराम से मैं बड़े चल रहा मैसेज आ गया हाय आई होप यू आर फाइन फाइन ही था मैं अभी अनफाइन हूँ और पता है इनका आता भी तभी जैसे मान लो ये मूव ऑन की लाइन है ना आप ऐसे एक पैर ऊपर करके खड़े हो कि बस कदम रख ही दूंगा तभी आता है इनका है ना कि एकदम फिर आपको लगता है 3 महीना और क्या यार अभी क्या करेंगे भाई अब अरे और भाई मैं कह रहा हूँ आपको आप चाहते हो कि मैं मूव ऑन ना कर भाई मेरे से बात करो ना मेरी दोस्त से पूछ रही है मैंने जवाब नहीं दिया इज रजत फाइन वो मेरे से पूछ रहा है आर यू फाइन दोस्त है भाई आपका आप तो ऑनेस्टली बताओगे ना मैंने कहा नहीं भाई एकदम हालत खराब हो रखी है कह रहा बे यार मूड मत खराब कर पा क्यों पूछा तूने भाई फिर
फिर मेरे को पूछ रहा है कि मैंने बोला भाई नॉट फाइन, तो कह रहा अच्छा उसको क्या बोलूं? मैंने नॉट फाइन हूं तो नॉट फाइन बोलना भाई ये सब। फिर उसने बोल दिया उसको कि ही इज नॉट फाइन, फिर उसका आर यू नॉट फाइन? ये कैसा चल रहा है भाई, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा? मेरे को भाई नहीं समझ में आ रहा। कुछ एक्सेस चाहते हैं कि आप एकदम स्टक, और पता है मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो ना आपको थोड़ा ईगो बूस्ट देता है ना? आपके दिल में तो आप काउंट करते होगे ना कि 4 कि 4 दीवाने हैं जो ऐसे बढ़ ही नहीं पाए मेरे से आगे भाई। तो मैंने तब एक शेर लिखा था, मैंने ऐसे बिल्कुल बढ़ने के लिए आगे, ऐसे सच भी नहीं है ये, बस मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए मैंने लिखा कि बगावत के बगीचे में एक ऐसा फूल लाऊंगा, कि बगावत के बगीचे में एक ऐसा फूल लाऊंगा, मोहब्बत याद रखूंगा, तुम्हें पर भूल जाऊंगा। कर नहीं पाया हूं, लिख दिया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया भाई। अरे होता है ना कुछ चीजें आप तब लिखते हो कि यार खुद को मोटिवेट करने के लिए। बीइंग अ राइटर मतलब आप लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। मैंने तब भी एक ऐसी चीज लिख दी थी, मैंने छोटा सा ख्याल था कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, बेरोजगार था मतलब, तब लिखा था मैंने कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा। आप सोचते हो ना यार जिंदगी में कुछ बड़ा करना है यार, एकदम ना ऐसे मचा देंगे, पापा मम्मी प्राउड हो जाएंगे एकदम, आपके मन में आता है ना, फिर एकदम से दोस्त का कॉल आता है बाहर चलेगा, आप कहते हो चल। मैंने तब एक ख्याल लिखा था कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा, और अभी खामोश बैठा देखते हो, किसी दिन शहर की हलचल बनूंगा। बेहद शुक्रिया दोस्तों। प्लीज वेलकम बैक योर होस्ट हर्ष। Guys, keep it going, keep it going, keep it going. We have the next 2 more performers, 3 more performers. Keep it going for Prachi. Where are you? Keep it going until she comes on stage. Keep it going. Let's go, let's go, let's go. Yeah, let's go, Prachi. Come on. Thank you. So, when I was in 7th grade, I had my first boyfriend. I didn't know what a boyfriend was back then, but yeah, that's what I called him. So, उसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया, but somehow my mom got to know about this and she was not mad. मतलब वो चिल थी कि तुम बॉयफ्रेंड बनाओ, but she was just mad कि मैंने उनको बताया नहीं कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो एक दिन मैं बहुत सैड थी, मैं रो रही थी कि मम्मी यार ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। तो she told me one thing which stuck with me, कि promises are meant to be broken, because I was sad about the fact my ex made a lot of promises to me and he never fulfilled it, even though I was in 7th fucking grade. But she said something to me and that stuck with me, that promises are meant to be broken. So it's a small poem on promises. It's in Hindi. वादे वादे वादों का क्या है, वादे यूं ही टूट जाया करते हैं, बस चुपचाप यूं ही बिखर जाया करते हैं। तुमने तो कहा था तुम आओगे मेरे पास, जब कोई नहीं होगा मेरा अपना मेरे साथ। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे सर आँखों पर बिठाओगे, जब भी ज़रूरत होगी तुम दौड़े चले आओगे। क्या हुआ उस वादे का जो तुमने हमेशा मेरे साथ रहने का किया था? क्या हुआ मैं पूछती हूँ उस वादे का जो तुमने हमेशा मेरे साथ रहने को किया था? टूट गया ना वो वादा भी बड़ी आसानी से, और ना तुम्हें गम हुआ मेरे दूर चले जाने से। पर ठीक है, वादों का क्या है, वादे तो यूं ही टूट जाया करते हैं। कभी सोचती हूँ उन्हें भुला दूँ, कभी सोचती हूँ उन्हें याद कर लूँ, कभी मैं जुदाई के सदमे उठा लूँ, कभी उन वादों को बयां कर दूँ। न जाने कैसा अंदाज़ था तुम्हारा, एक पल में किए वादे दूसरे ही पल में भूल जाते थे। खैर, वादा तो तुम्हारा ये भी था कि महफूज रखूँगा तुम्हें, वादा तो तुम्हारा ये भी था कि महफूज रखूँगा तुम्हें, पर क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि कैसे बीतते हैं मेरे लम्बे। खैर, वादों का क्या है, वादे तो यूं ही टूट जाया करते हैं। ये बेवफाई नहीं, एक धोखा है, पर दीवानों को किसने रोका है। झूठी सारी बातें हैं, झूठी है कस्में सारी, हमें तो लगता है कि झूठी है रस्में सारी। तुम तो कहते थे ज़रूरत है मुझे जैसे चांद को चांदनी की है, तुम तो कहते थे कि ज़रूरत है मुझे जैसे चांद को चांदनी की है, पर क्या करे जनाब, वक्त के साथ ज़रूरतें भी तो बदलती है।
खैर, वादों का क्या है, वादे तो यूं ही टूट जाया करते हैं। वादा तो तुम्हारा ये भी था कि ज़िंदगी भर साथ रहूँगा तुम्हारे, वादा तो तुम्हारा ये भी था कि ज़िंदगी भर साथ रहूँगा तुम्हारे, पर तुम तो मुझे यूं ही छोड़ गए दर्द के हवाले। अब तुम्हारा ज़ख्म देने का अंदाज़ भी तो कुछ ऐसा है कि ज़ख्म देकर पूछते हो कि हाल कैसा है। उम्मीद नहीं थी कि तुम भी ऐसा करोगे, क्योंकि वादा किया था यार तुमने ताउम्र साथ रहोगे। पर खैर, वादों का क्या है, वादे तो यूं ही टूट जाया करते हैं। पूछा एक दिन मैंने खुदा से कि गलती क्या थी मेरी। खुदा ने कहा गलती तुम्हारी नहीं, ये कहानी मैंने लिखी ही अधूरी थी। वादा एक मेरा भी है तुमसे और मैं अपने वादे निभाती हूँ। रह नहीं पाओगे मेरे बिना, भुला कर देख लो, यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। रह नहीं पाओगे मेरे बिना, भुला कर देख लो, यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। हर जगह महसूस होगी मेरी कमी, चाहे फिर अपनी महफिल कितनी भी सजा कर देख लो। दिस इज़ जस्ट द लास्ट वर्स। बहुत शिकायतें यार तुमसे और सबसे जिन्होंने वादे तोड़े हैं। बहुत शिकायतें हैं यार तुमसे और उन सब से जिसने वादे तोड़े हैं, पर क्या करूँ नादान दिल जो टूटा था मेरा। चलो ठीक है, अब और कोई शिकवा नहीं, बस एक सवाल के जवाब की तलाश है। क्यों लोग ज़ख्म देकर मरहम लगाना भूल जाते हैं, दिल में आग लगाकर बुझाना भूल जाते हैं। क्यों लोग रुलाते हैं हमें और मनाना भूल जाते हैं। क्यों लोग वादे करते हैं और निभाना भूल जाते हैं। थैंक यू। Keep it going for Prachi. Just last two acts. Can we welcome with a huge round of applause, Dhriti? Jaldi, time nahi hai. Come on. अरे ताली बजाते रहो. I'll clap with y'all. Yeah. Until she comes on stage. Okay, there you go. There have been performances, people have made you laugh, people have sung on stage. मेरा confidence यहाँ था, यहाँ से यहाँ हो गया. And the fact that the poem is on confidence. This is gonna be fun. The poem is titled Self. Confidence, reliance, courage, and fortitude. Got lost in words, forgotten over actions of theirs, not mine. Suddenly, the echoes in my head, which I could barely apprehend, started screeching. These echoes were the dying self-awareness. Driven by anger, realization settled in that their doubts had taken shape of mine and their inconsistency had become my inhibition. To push all of it aside, self-obsession made its way. Confidence and fortitude were no longer of concern, but reliance and courage were still a problem. Self-awareness and self-obsession were the weapons that they wanted. What more do you want? I screamed one day. Yet another sleepless night, the answer became crystal. It was self-love. How do I instill that in me? Through books, motivational quotes, performing on stage? How do I instill that in me? How does anyone do that? Through validation, maybe. No, that can't be it. That only brings uncertainty, so maybe self-validation, but for self-validation, you need self-one. So how do I do that? It's a vicious cycle, a never-ending conversation with yourself, exhausting every brain cell to reach that shore where self-love could be visible, let alone be instilled. Searching for answers, I stumbled upon a saying. Think too high of yourself and you'll become rigid. Think too low and you'll be left with nothing. Though the saying was simple, it got me thinking. I was the former, thinking too high, relying on self-obsession all the time. It hurt like hell, but I scraped it out. Obsession was the unsettled phase, whereas love was the inner stable praise. Obsession was a coping mechanism, a mechanism built to restrict. To restrict yourself from accepting your flaws and covering it underneath this shiny cloth or a mirage of perfection. Perfection which can never exist in its absolute form but make you believe that you can never be wrong. Perfection and obsession were linked together, restricting life from being light as a feather, rooted from others' expectations, an image of mine. Obsession only made matters worse. Whereas love is like an art, pure, real, and majestic. So I scraped obsession out, stopped serving others' role, and looked deep inside my heart's hole. I filled it with acceptance.
Acceptance of who I am, not who I should be. Acceptance of curly hair, undone nails, a weird nose, and pimples on my face. Acceptance of skinny body, even social anxiety, and all the things that I could not change. Acceptance that I'm not perfect, not who I have to be. Acceptance changed everything, brought with it a clear understanding that I am who I am and I'll be who I want to be, not by fulfilling others' desires, because now I love me. Confidence, reliance, courage, and fortitude. No longer lost in words and forgotten over actions. Only thing that mattered now were my thoughts and my satisfaction. I was thinking of performing something else, but since almost all of you have not had the love of your life at this point, I think you will relate. So this one is To the Next Love of My Life. To the next love of my life, I'm asking you to please be kind. I'm already harsh with myself, so I don't need you to also be that someone else. To the next love of my life, I'm asking you to be mine with time. Do not let my heart burn. Either you don't leave or you timely return. Yes, the next love of my life, I'm asking you to be my paradise. I don't want roses or pearls, but I should be a part of your world. To the next love of my life, please don't be an oversight, because I'm tired of finding the one, hoping to find you at the next turn. You, the next love of my life, just be my day and be my night. A partner in crime who walks side by side because your soul is attached to mine. To the next love of my life, just don't put up a fake disguise. Don't fear commitment. Let's build a relationship and not some convenient agreement. To the next love of my life, don't ever end this with lies and goodbyes, because this time I want this to be real. So only make an entrance if you can live up to these ideals. Thank you so much. Keep it going, keep it going, keep it going for Dhriti. Beautiful, beautiful, beautiful. Can we have one last round of applause for our last act of the evening, Dhruv Sharma. Keep it going until he comes on stage. Last act, you guys have been fantastic, yeah. Monday evening, come on. अपने होस्ट के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार. अरे जोरदार, आप सब लोगों के लिए इतनी तालियां बजी, उसके लिए भी बजाओ. थक गए हैं लोग थोड़ा. चलिए, ये 4 चंद अशार हैं, संभालिएगा. यूं तैयार हुए हम तुझे नजर आने तक, यूं तैयार हुए हम तुझे नजर आने तक, लिखी ये गजल तेरा शहर आने तक. यूं तैयार हुए हम तुझे नजर आने तक, लिखी ये गजल तेरा शहर आने तक. गुजर गया हर तूफान लूट कर हमको, खुदा तेरी सराय के नजर आने तक. गुजर गया हर तूफान लूट कर हमको, खुदा तेरी सराय के नजर आने तक. और दर्दे दिल भी दर्दे दिल कहाँ होता है, दर्दे दिल भी दर्दे दिल कहाँ होता है, दिल के इस कमरे के अंदर आने तक. शुक्रिया. दर्दे दिल भी दर्दे दिल कहाँ होता है, दिल के इस कमरे के अंदर आने तक. रजत भाई, सुनना है कि इतनी आसानी से खुद को कहीं जाने ना दिया, इतनी आसानी से खुद को कहीं जाने ना दिया, हम बैठे रहे सैलाब के घर आने तक. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया. एक बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. एक छोटी सी नज़्म है, एंड दिस इज अ पीस दैट आई हैव रिटन टू मेक समवन स्पेशल फील अ लिटिल बेटर अबाउट हरसेल्फ. लॉन्ग बैक आई रोट दिस. इस नज़्म का उन्वान है स्ट्रेच मार्क्स. वो अपने बदन पे खिंची लकीरें मुझसे छुपाया करती थी, जैसे छुपा रही हो अपने माजी का कोई मलाल, कोई जख्म, कोई ताना, कोई धिक्कार. जिसने उस पर खिंची उन लकीरों को बता दिया हो एक विकृति, आंखों में चुभने वाला कांच का कोई टुकड़ा. एक दिन उसके संकोच को अपनी बाहों में लेकर कपड़ों के परत के नीचे ढूंढा उन लकीरों को. उसकी कमर पर खिंची वो रेखाएं जैसे किसी बाघिन के शरीर जैसी हों, जैसे उनकी बनावट मेरे दिल की धड़कनों का एक नक्शा हो, जैसे वो रास्ते हों जहां मैं खो जाना चाहता हूं, जिन्हें रोज़ तय करना चाहता हूं, ताकि एक दिन उन रास्तों में मुझे वो मिल जाए, किसी भी मलाल या धिक्कार की चोट से मुक्त, एक आज़ाद बाघिन की तरह, ताकि बता सकूं उसे कि वो लकीरें कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर हैं, उसके तन और मन के जैसी. शुक्रिया. Keep it going for Dhruv, guys. Beautiful, yeah? So that brings us to the end of today's open mics. Huge round of applause for all the performers that have performed so far. For Aditi for handling the stream. For Vivian taking your photos. मुझे पता है सबको photos चाहिए.
सबको फोटोज चाहिए है ना. Don't DM Habitat tomorrow morning. Where are my photos? You will get them in your DMs and they'll tag you in the post within 5 to 7 business days. ठीक है? So just be a little cognizant. It takes time. Next, if you guys want any video from this entire performance, the entire event has been live streamed on YouTube. So you can go to Habitat's YouTube channel, download it. There are a lot of illegal sites that y'all can use. Download it, and agar y'all want to trend on Reels and upload it, just don't do it. Everyone should be trending on their Reels. Everyone should upload it. But just give credit to the Habitat team. Like I said, validation ke alawa, IP is the only thing for an artist. So they've put in a lot of effort. So even if you're putting your photo anywhere, give credit to the Habitat team. They've put in a lot of effort for this event. Agar aap Bumble पे डाल रहे हो image, तो वहाँ पे भी डाल देना. ठीक है. जाते जाते आपके लिए एक शरारती शेर है. सुनना चाहोगे? आओ तुम्हें सुनाए बातें कुछ खास जिसके लिए रहना होगा तुम्हें मेरे पास. आओ तुम्हें सुनाए बातें कुछ खास जिसके लिए रहना होगा तुम्हें मेरे पास. मेरा हाथ थाम कर तुम चलो मेरे साथ, फिर मैं बना ही लूँगा तुम्हारी माँ को मेरी सांस. Thank you guys. That's been my time. My name is Ash Pranadra.